विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तो कौन कौन सा? एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ पेनिक एंड एंजॉयमेंट, नहीं। इन डिफरेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिल्कुल सही। डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल, सही है। नॉन इंजुरी टू एनिमल लाइफ, सही है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ रिजेक्टेड वैदिक अथॉरिटी एंड रिचुअल्स, ठीक। अहिंसा was central to both religions. However, Jainism promoted extreme penance, while Buddhism advocated to मिडिल पाथ, ठीक। तो जो ये है पहला स्टेटमेंट, वो थोड़ा सा वो मतलब इनडिफरेंस पैदा कर रहा है, बाकी और सब लगभग सेम था। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तो वही था, इंडिफरेंस टू द वेदास एंड रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स वेयर कॉमन इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम इज यूनिक इन बुद्धिज्म एज जैनिज्म ऑफन एम्ब्रेस्ड एक्सट्रीम पेनेंस, मतलब खुद को जो पाप किए हैं उसका दुख देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अहिंसा कॉमन है, इंडिफरेंसेस टू वेदास कॉमन है, सेल्फ मोटिफिकेशन ये कॉमन नहीं है, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स कॉमन है। सेल्फ मोटिफिकेशन वॉज प्रैक्टिस्ड बाय जैनिज्म बट बुद्धिज्म रिजेक्टेड इट, प्रमोटिंग द मिडिल पाथ। बोथ अहिंसा एंड रिजेक्शन ऑफ वैदिक authority and rejection of ritual were common in both, ठीक। Lord Buddha preached the following four noble truths, put them in order to using the code given below. For there is suffering, सही है। There is cessation, there is cause of suffering, सही है। There is cessation of suffering, ठीक। There is path leading to cessation of suffering, मग्गा इसको कहते हैं, ठीक। ये मान लीजिए दुख हो गया, ये समुदय हो गया, ये निरोध हो गया, ये मग्गा हो गया। फोर नोबल ट्रूथ आर्य सत्य was taught by Gautam Buddha are दुख, there is suffering, represent truth of suffering that life is inherently involves pain, sorrow and dissatisfaction. समुदय, there is cause of suffering, the cause of suffering is craving, तनहा, ठीक, desire and attachment। फिर निरोध, there is cessation of suffering, suffering can be overcome by eliminating craving, nirodh। magga, there is a path leading to the cessation of suffering, the eightfold path is the way to achieve liberation, nirvana। Okay, the first sermon delivered by Buddha at Sarnath is called Dharma Chakravartin Sutra, where he explained this truth, the eightfold path, ashtanga marg, include right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration, ठीक। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, जैन और बुद्ध दोनों बिलीव करते, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट फिलॉसफी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वेयर करेक्ट, सही है। सॉल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, नहीं। बोथ men and women could attain salvation, नहीं। मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ वाज द बेस्ट वन, ये बुद्ध। माइग्रेशन ऑफ सोल वेयर करेक्ट, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म say the belief of karma which is universally law of cause and effect. The transmigration of soul or rebirth is accepted by both religions, where souls goes through cycles of birth and death until liberation, moksha, is achieved. Jain emphasize strict asceticism, ठीक, अहिंसा and self mortification to achieve liberation, ठीक। बुद्ध advocate middle path, avoiding extreme austerities and indulgences, focusing on meditation and ethical living. According to the philosophy of Buddhism rejected the concept of rebirth, नहीं। Soul is mortal, हाँ सही है। Buddhism does not reject concept of rebirth. Instead, the purpose of doctrine of pratitya samutpad, dependent origination, ठीक। The soul atma is permanent entity is denied in Buddhism, but rebirth occurs through continuity of consciousness
विजनन, आत्मा को तो नकार दिया गया था, लेकिन मतलब उसके साइकिल में रहने का वो था। अनत, नो सेल्फ इज सेंट्रल डॉक्ट्राइन वेयर सोल इज मॉर्टल एंड ट्रांजिएंट अनलाइक हिंदू बिलीव्स ऑफ एन इटर्नल आत्मा। आत्मा इटर्नल थी हिंदू बिलीफ में, लेकिन इसमें क्या है, मोर्टल है। ठीक, मोर्टल क्या होता है? मोर्टल मतलब नश्वर, वेयर मतलब यहाँ इसमें क्या है, बुद्ध में आत्मा नश्वर है। और ट्रांजिएंट मतलब और क्षणिक है, मतलब क्षणिक। अनलाइक हिंदू, ये हिंदू हिंदू में क्या माना जाता है, इसे इटर्नल माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? ये इटर्नल मतलब शाश्वत है, मतलब हमेशा रहने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, सही है, ये रिजेक्ट नहीं करता है। इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक्ड ब्राह्मण, सही है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, सही है। बुद्धिज्म डिड नॉट outrightly reject the caste system, but it opposed the supremacy of Brahmins and promoted social equality. Buddha challenged the social hierarchy, promoting the idea of calm and individual spiritual potential, irrespective of birth status. While preaching equality, Buddhism also classified certain castes as lower, especially those involved in ritualistic practices. ठीक है। अम्बेडकर नवयन Buddhism in the 20th century strongly rejected the caste system, advocated social justice and equality. Early Buddhist Sangh, including people from all castes, including Shudra and women, promoting more egalitarian society. ठीक है। हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी, त्रिपिटक, थ्री बास्केट, शुद्ध पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक are key texts in Buddhism explaining doctrine and monastic rule. Buddhist Council, the four councils were critical and shaping Buddhist philosophy. Fourth Council under Kanishk solidifying the Mahayana and Hinayana split. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिफरेंस देख लिया जाए। फाउंडर गौतम बुद्ध और जैनिज्म के महावीर, सेंट्रल डॉक्ट्रिन मिडिल पाथ एंड अनंत, नो सेल्फ। जैनिज्म का एक्सट्रीम एसिटिज्म और अहिंसा। बुद्धिज्म का सल्वेशन, निर्वाण थ्रू एट फोल्ड पाथ, और ये मोक्ष थ्रू ऑस्टेरिटी। व्यू ऑन कास्ट, चैलेंज ब्राह्मण सुप्रीमेसी। जैनिज्म रिजेक्टेड कास्ट कंप्लीटली। बुद्धिज्म व्यू ऑन सोल, नो इटर्नल सोल, अनंत। और जैनिज्म बिलीफ इन इटर्नल सोल। ठीक, मतलब कि सोल होती है। रीजन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म स्टेटमेंट, सिंप्लिसिटी ऑफ रीजन, सही है। स्पेशल अपील टुवर्ड दलित, सही है। मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन, सही है। रीजनल लैंग्वेज, सही है। साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर, ये गलत है। द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल, सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन। Buddhism advocated a simple life, free from complex rituals and sacrifice equivalent to Vedic tradition. Eightfold Path, the Four Noble Truths, provided practical guidance for ethical living. Special appeal towards Dalit, Buddhism rejected the caste system, promoting equality and dignity for all, especially Dalit, lower caste. Sangh, Buddhist monastic order, was open to all, regardless of caste or gender, providing social mobility and acceptance. Buddhist monks like Mahind and Sanghamitra, sent by Ashok to Sri Lanka, undertook missionary work to spread Buddhism across India and beyond.
Ashoka's patronage, including rock edicts, pillars, and missions, played a crucial role in propagating Buddhism. Use of regional language instead of Sanskrit, Buddha preached in Pali and Prakrit, which were regional language understood by common people. Linguistic accessibility made Buddhism a mass movement. Sounded of Vedic spirit by philosophers. Galat Buddhism did not align with Vedic philosophies but challenged Vedic rituals and Brahmanical supremacy. It provided an alternative spiritual path and the ritualistic practices of the Ved. ठीक है. Decline of Buddhism in early medieval times. Buddha was considered an incarnation of Vishnu and became part of Vaishnavism. सही है. Invading tribes from Central Asia adopted Hinduism and persecuted Buddhists. नहीं. The king of Gupta dynasty were strongly नहीं Sung ने वो किया था. Buddha as an incarnation of Vishnu. During Gupta period, Buddha was assimilated into Hinduism as a ninth avatar of Vishnu, which weakened Buddhism as a distinct religion. This absorption led the decline of Buddhist institutions as many Buddhists were reabsorbed into Hinduism. Invading tribes from Central Asia with Central Asian tribes like Hun adopted Hinduism. There is no significant evidence of persecution of Buddhists by them. Instead, many invaders, including Kushan, supported Buddhism. जैसे कनिष्क का patronage. Gupta dynasty stands on Buddhism. Gupta rulers were primarily Vaishnavites, but they were not hostile towards Buddhism. Fahin accounts during Chandragupta II's reign show flourishing Buddhist monasteries and monastic tradition. Real decline began with Muslim invasion in 12th century, leading to the destruction of monasteries and like Nalanda and Vikramshila. Adi Shankaracharya's revival of Hinduism through Advaita Vedanta also contributed to Buddhism decline. Advaita. Sects of Buddhism and Jainism. Sautrantrika and Samit were sect of Jainism. Nahi. Sarvastvadin held that the constituents of phenomena were not wholly momentary but existed forever in a latent form. ये तो बिल्कुल मुझे नहीं पता है लेकिन देख लीजिए. Sautrantrika and Samit, these were sect of Buddhism, not Jainism. ठीक. Sautrantrika school emphasized canonical sutra and the concept of momentary Chanvad. Samit was part of Hinayan Theravada tradition, advocating existence of personal entities, Pudgal. सर्वस्ववादीन डॉक्ट्राइन सर्वस्ववादीन ये हीनयान स्कूल का प्रपोज्ड philosophy of everything exists, sarvam asti. They believe that past, present and future phenomena have a latent existence. Their philosophical stance was opposed by Sautantrikas who believed only in present reality. अच्छा, महायान बुद्धिस्ट स्कूल, महायान योगाचार्य, माध्यमिका, जैन, वज्रयान, हीनयान थेरावाद, सर्वस्तिवदीन, सौतंत्रिका, समितिका, वैभीषिका. ठीक. डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार. विहाराज आर प्लेस ऑफ वर्शिप. विहार जो था वो रहने वहने का था, मतलब और मतलब वहाँ बारिश वारिश के समय रहते वहते थे शायद. चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप. हाँ सही है. विहार इज ए ड्वेलिंग प्लेस. चैत्य बुद्धिस्ट श्राइन और प्रेयर हॉल कंटेनिंग ए स्तूप. चैत्य ये हीनयान का लगभग ये था. ठीक. और यूजुअली रॉक कट एंड यूज्ड फॉर वर्शिप एंड रिचुअल्स. जैसे कारले चैत्य हॉल महाराष्ट्र. विहार ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर मॉन्क्स, primarily used as living quarters and for meditation and study. जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी. विहार.
बुद्धिज्म माने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हाँ ठीक। स्तूप ए हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर containing relics of Buddha and Buddhist sant used for meditation. फेमस स्तूप सांची, अमरावती, धमेक। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य एंड विहार इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। स्तूप, चैत्य and vihar are architectural form associated with Buddhist art and culture. Ashoka built 84,000 stup, including famous Sanchi stup. Chaitya served as prayer halls while vihar are living quarters for monks. ठीक है। डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार क्या है? डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार क्या है? चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क्स। ठीक। चैत्य इज refer to prayer hall or shrine in Buddhist rock cut architecture. It often contains a stupa and serve a place of worship. Chaitya hall generally have a vaulted ceiling, pillared ashley and apse containing the stupa. जैसे कारले चैत्य महाराष्ट्र। विहार इज ए dwelling place for Buddhist monks used as monasteries. It is typically a simple structure and cells surrounding a central courtyard. The monks use it for residence, study, and meditation. Famous example Ajanta Caves, Maharashtra. Earliest vihar were built during Mauryan period and later developed during Satvahan period. Earliest viharas were built during Mauryan period और लेटर सातवाहन पीरियड में डेवलप हुआ। ठीक। विहार एंड चैत्य वे आर ऑफन रॉक कट, पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न इंडिया। Rock cut Chaitya and Viharas in Deccan statement. The early Chaitya Griha and Viharas of Guttanpalli in Western Godavari district are rock cut. Chaitya and Viharas of Eastern Deccan are usually rock cut. सही है। Guttunpalli caves, West Godavari district, Andhra Pradesh. Guttunpalli complex include rock cut Chaitya and Vihar. It is an important Buddhist site showcasing rock cut and structural architecture. Eastern Deccan rock cut tradition. Eastern Deccan region including Andhra Pradesh is rich in rock cut architecture. Buddhist sites like Amravati, Nagarjunakonda and Guntunpalli have rock cut vihar and Chaitya. Satvahan period, 1st century BC and 2nd century CE saw a flourishing such architecture. Buddhist caves in the western Deccan such as Ajanta, Ellora and Karle are also notable examples of rock cut Chaitya and Vihar. धन्य कटक अमरावती महासंघिका सेंटर आंध्रा। धन्य कटक modern Dharnikota located in present day Amravati Mandal, Andhra Pradesh was an important Buddhist center under Mahasangika sect. ठीक। Amravati Stupa, also called the Mahachet, is a major monument of Mahasangika tradition. Amravati Mahachet, Mahasangika tradition. The Satvahan patronized the site, promoting Buddhist teaching. Mahasangika sect, an early Buddhist school that split the Asthavirvadins around the 3rd century BC, known for liberal interpretation of Buddhist doctrine and defection of Buddha, prominent in southern India, particularly in Andhra region. The Gandhara region, modern day Pakistan and Afghanistan, was known for Gandhara school of art and Mahasangika influence. Gandhara region, modern day Pakistan and Afghanistan, was known for Gandhara school of art. Kaling, Odisha and Magad were part important Buddhist center, but Dhanyataka's prominence was particularly in Andhra region. Prominent form of Buddhism during Sultan period कौन सा था? वज्रयान। सुल्तान पीरियड के समय वज्रयान बुद्धिज्म known as Tantric Buddhism emerged in 8th century CE, flourished in the medieval period, especially during Sultan period.
era, prominent in eastern India, Tibet, Nepal, and Bhutan. Text Arya Manjusri Moolkalp. Go here Samare Tantra. Practice and belief incorporates tantric rituals, mantras, mandals, and mudras. Emphasis Bodhisattva path, focusing on enlightenment in single lifetime. Guru teachers play significant role in guiding disciplines. Pal dynasty 8th to 4th, 12th centuries in Bengal and Bihar were patterns of Vajrayana Buddhism. The decline of Buddhism in India led many Vajrayana practitioners to migrate to Tibet, influencing Tibet Buddhism. Theravada and Hinayan are more conservative form of Buddhism, emphasizing early teachings of Gautam Buddha. Tantrayan is often used as interchangeably with Vajrayana, but Vajrayana is more precise term in context of Indian Buddhism. ये खत्म हुआ. थैंक यू. बाय बाय.